So all set for the second semi-finals between YASH developers of Naveli Panchayat and Sateri cricketers of Kulchare Municipality. And it's going to be Sanjay Naik, informed Sanjay Naik and Rajat Sawant at the top. A happy hunting ground always for him. Here is W. Oh, that's a good ball here. He wanted to play actually a long off region, and he deceived. He started with a slower leg cutter against Sanjay Naik. They both play with each other in Goa police team. Recently, I had mentioned this many a times. Just recently concluded All India Police competition. W was awarded the player of the tournament, and Sanjay Naik was also a member of Goa police team. It's a feather in the cap not only for Goa police but Goan cricket on the whole, where everyone congratulated them for being victorious in just the first championship, first of its kind for all the police in entire India. Oh, he didn't know anything. Cut him in two halves. Trying to play with soft hands and trying to get a single. And these are power play overs. 8 over games, the mindset becomes different. 8 over games, you feel, yes, we have to maybe take the game a little deeper. People are not used to playing 8 or 10 overs games, especially tennis ball cricketers. And that plays in the minds, whether to preserve the wicket, whether to go all out. Slightly wide, and umpire says I'm well convinced with my decision. W is not happy. Maybe he feels that he has deceived the batter. Yes, deception was there. Slightly maybe wide. Calling of wides and all the shots is at the discretion of the umpires. All the decisions. I think these are good players who abide by the rules and regulations of MCC code of laws that umpire follows mostly, and some organizers definitely have some of their own rules which provide a little bit of entertainment and something different for the captain to think about how to go about the calculations in different matches, how to get a particular bowler in a normal power play or the batting power play. So he is very much sure that I'm not going to bowl pacey deliveries here to Sanjay Naik, where he likes to ball to come onto the bat. All the balls have been slower leg cutters, and that looks to be the planning here. That looks to be the planning from W, and maybe they talked about this, how to go and bowl Sanju, especially on this surface. He likes this surface. He likes to let the ball come onto the bat nicely. Once again, a slower leg cutter, a definite plan, a definite ploy here from W. Oh my God, what a kind of throw this is. I think W has all the right in the world to be furious. This is a haywire throw. Even the Superman can't do anything. He has done everything right to dive. The throw was totally out, away from the fielder. 5 runs given. 5 leg byes here. This is not good. They should have been much better in the field. Samath was backing in the right areas, but the throw was so wide, he hardly could do anything. And he's one of the quickest around in the cricket circle. Very fit and very agile, athletic. Once again, it's all slow balls in the first over. And W with a set plan, although he will be angry with that. 5 extras given away, 5 wides. And W and Superman are having a rough time in the middle. They're discussing he should have maybe covered it up. So first over gone, it's 8 without loss. Just 2 off the bat and 6 of the extras.
Now in comes the second over. Gopal Gaus. So second over of power play, mandatory just to fielders allowed outside. And look at the confidence of Gopal Gaus. Normally he's a spinner, and I think this is a good ploy here. Something new tried here by SANVORDEM boys. Both new balls in the first over at both the ends. I'll come to that point later after this ball has been delivered. So there is a definite plan here to be bowling spin. They are not bowling medium pacers against Sanjay Naik, and they have immediately got Gopal Gaus. You can see the tactics are really working here. To keep Sanjay Naik in check is not easy. That's the full toss ball. That might be catch. Oh, good effort. Very good effort in the field. He was very close to the boundary rope. And Sanjay did not get the timing right over there. Maybe a little lack of power. Maybe a little high on the top of the bat. Just getting a single. A chance was created there by Gopal. I was coming to the point. Two new balls are used at both the ends. In fact, in both these overs. Not ends, both the overs. First it was bowled by W, now it is bowled by Gopal. The reason is if the ball goes out of the park or maybe it is lost, then you can use the other ball around after the two overs. So good piece of thought process here put by SANVORDEM boys, something new and something that can be applied in other tournaments as well. Appeal from behind the wickets, but no one else other than keeper appealed. Maybe some sort of sound that he heard. And a dot ball. So far it has been more dot balls for both the batters rather than anything coming off the bat. Two singles for Sanjay Naik, one single for Rajat. Oh, top class bowling this is. Top class bowling from Gopal Gaus. You can imagine he's a leggy, and it's very difficult to grip this tennis ball where there is a little rubber fuss on the top of that, and that is very difficult to hold tight for a grip. Still he is doing a fabulous job. He is landing the ball in the right areas, getting the ball away from the right-hander, and bowling with the new ball. Fabulous skills here from Gopal Gaus. That's once again top class, absolutely magnificent. That's why you should have leggies in your attack. That's why you should have spinners in your attack. And Gopal Gaus is the best in Goa at the moment as far as leg spinner is concerned. They've got two. Second one will come later on. Kalpesh as well. This time he goes for the switch hit. There is a man placed over there. Man placed over there. They knew that he's going to go for the switch hit. Fabulous planning, and all the ploy and all the tactics of YASH developers are working at the moment. There was put a stranglehold in the runs, and that's the reason why Rajat Sawant has to depart by just one on the board, and the total score is 9 for 1. In comes Fahim. A very elegant left-handed batter. Certainly there is something different as far as planning is concerned from Sateri cricketers. Maybe to counteract the leg spin. That's the reason why left-handed has been sent up. Because they know that they have got two leg spinners who might be bowling those 4 overs. And 4 overs in an 8 over format is almost 50%.
And that is the thought process here to send the left-hander up the order. Apart from Bablu was there, Pushpashil was there. They got batting lineup pretty well covered up, but I think that's a good ploy here, good tactic from Sateri cricketers. So again, this should be a catch. This should be a catch. Oh, lucky Sanjay Naik. Lucky here. Well, they are putting pressure on Sanjay Naik. They know that he doesn't like to play against spin, especially against the leg spinner. And that's why they have put both the leggies to get rid of Sanjay Naik. He is the danger man here. He's the man in form, just like Pushpashil. That's why will come later on. Good thinking, good planning, and now the left-handed batsman will be on strike. Let's see how Fahim goes about this one, or whether they have the googlies to tackle the left-hander. If they have googlies to tackle the left-hander, and if they can bowl in the right areas, it won't be easy for Fahim as well. आणि आम्ही हाऊजेस केल्ले आसात 100 रुपयाक 3 आणि पयले इनाम आसतले मला एकच इनाम ते 5000चे 5000चे आणि जर तो सर्ती चढ खपल्यो जाल्यार आम्ही इनाम सुद्धा वाडयतले. You can see he is bowling that quick off cutters. He normally is a leg spinner, but he is bowling those quick off cutters for the left hander. The smart piece of bowling starts off with a wide. 100 रुपयाक 3 सर्ती 3 कुपना. सो कोणाक जाय जाल्यार तांणी घेवचें आनी डेफिनेटली घेवचें, कारण हावजी म्हणटा ती सगळ्याक आवडटा आनी आमी सांजचो मागीर ताजो ड्रॉ काडटले. आमचे ऑर्गनायझर्साचे मेंबर तुमचे म्हऱ्या येतात हावजी घेवन. Actually very good skills to possess. I've not seen many who bowl leg spinners, also bowl off spinners, but nowadays it becomes a necessity. It becomes a necessity because you are going to bowl in different tournaments and you are going to face different left-handers, and if you are going to bowl in overs like second, third, fourth over, you should have either a googly, or if you don't have a googly, then try and bowl off cutters just like the way Kalpesh is bowling. Now definitely he's not going to bowl the left cutters, he's going to bowl the leggies here, and will be slow in the air for Sanjay Naik. Enjoying this wonderful battle between bat and ball. You can see that the way he has shuffled across, still he was wide. The guideline comes into effect when the batsman shuffles, but when the ball is totally outside the last line, the marking line, then it is still a wide, even if batsman shuffles or not shuffle. So that's the right umpiring, that's what the rule says. And I don't understand. I can understand a keeper is definitely asking, keeper is in a better position, but somewhere who is in the square leg or somewhere who is in the covers or extra cover, he hardly knows how the ball has gone. So maybe backing their bowlers, maybe backing their keeper. That's a lovely ball here. This is beautiful piece of bowling. Just loving the tactics here against Sanjay Naik. He has been handcuffed here. Totally handcuffed by the bowlers, especially the leggies. Another dot ball. Still the score is struck on 13. Oh, this is top class. This is beautiful. I just love the way this battle is raging on. Sanjay Naik is still holding strong. He knows that his time will come. They are bowling slow in the air. Sanjay Naik likes the pace. They are not providing it. And now Kalpesh is going to bowl the off-cutters. Lot of thinking from Naveli cricketers, YASH developers. Set plan for every batsman here so far, and it's working. 14 on the board. Third over in progress. That's in the air. No one moved. No one moved here. That's a frame for you. He has that good class and he has got that swing. There's 6 runs. They were being handcuffed. They are being tied. Now they are trying to break the shackles here. Gets the 6 after a long time. This is the first 6 and that came in the third over. The score moves on to 20 for the loss of 1.
That's the very reason that Fahim was sent. And he is a new addition to this Kurchare municipality team. And a wonderful addition. They were missing left-handed batters in their team, and he has been included in the squad. This time, that's good fielding here. First there was a call of yes, then there was a hesitation, and the dot ball will finish over number 3. Is 20 for the loss of 1 at the end of 3. Good start here by Navelim cricketers with thoughtful bowling. So Gopal Gauss continues. The leg will continue, and with the plan that is set, Sanjay Naik still on the wicket, who has survived the first 2 overs. Once again, that's a good shot here from Sanjay Naik. It can get only a single in the deep. Good part about Sanjay Naik so far is, in spite of not getting the boundaries and sixes, is holding the fort. He knows that his chance will come when the 4th or 5th bowler option will be opted here. So far at the moment, it's not a Sanjay Naik that we have seen in the previous game or the entire tournament. And you should give credit to the bowling unit. You should give credit to the thinking of this team. And now it's going to be for him. It will be interesting here to see whether he bowls the googlies here. That was short ball. That was short ball. No one patrolling that short fine leg region. And Fahim is rescuing and getting them out of the clutches here for Sateri cricketers. 4 runs towards the fine leg. Ample of time. There was no one placed at the fine leg region. Now they are doing a slight correction in the field. They placed one in the covers as well for the drive. That's lovely piece of bowling. He goes for the drive. Chance of a runner. Direct hit is required, and he makes it in the end. Good piece of fielding here from Samad Gaon Superman, but Fahim is also quick in between the wickets. So far, all balls are counted here of Gopal Gauss. The important is Gopal Gauss so far has got rid of Rajat. That's the only wicket he has got, and he has got still 3 balls left in his spell. So now they are trying to get a man in the point region to get the 4 fielders inside the inner ring. 3 men kept in the deep. 1 for the lap shot, 1 for the pedal shot that he plays. This is good. This is really good. Bowling the googly here, expecting the ball to go away. The ball came back in, hitting him on his body. And the battle is so intense. It is really eye-catchers so far. This time he connects. This time he was waiting. This was in the slot. And Sanjay Naik strikes. Strikes after a long time. 6 coming for Sanjay Naik almost in the 4th over.
So that is, we are almost closing in towards the halfway mark, and it will be the last ball of the fourth over. Score slowly taking a little shape here, 32 at the moment. Well, this is not going to be a very high scoring match, as both have very good bowling lineup. Somewhere around 70, 75, 80 is going to be a good total. This was a googly, but went down the leg side. Not a bad ploy here. Maybe Sanjay Naik is picking it from the hands, or maybe is picking, understanding where the ball is landing. Oh, that's a lovely piece of bowling. Flight, slow in the air, loopy, landing under almost 3 meters away from the right-hander. And good spell here from Gopal Gaon. Picks up a wicket, and end of 4 overs is 32-33 for the loss of 1. This is in the air, and that's a wicket. So Fahim has to go back. Sarvesh comes and Sarvesh strikes. So wicket of the very first ball in the Sarvesh fails, and the score is 33 for the loss of 2. The start of 5th over. What a shot here. Pope started from very left back in the previous game, that is the quarterfinals. He was the player of the match in that quarterfinals, and now he has started with a bang. 39 the score moves on to. And this is the best pair to have for Sateri cricketers at the moment. Both in-form batters. So again, Pope going for the big one. Well, I've seen Sarvesh can generate a little bit more pace. When I was in Sakri or other tournaments, I saw him bowling, and he bowls very well and has a nippy action. Oh, he missed that. He missed that. Pope shuffled, and that's the reason that guideline shuffled. Well, this was a freebie, missed opportunity for Pope.
But he'll concentrate back on the next over, next ball. There's nicely played here, finds the gap, good piece of fielding here, very good piece of fielding, storms in towards the ball rather than waiting for the ball to come, and just a single. Score moves on to 40 in the 5th over. So not where they intended so far, but they're getting the boundaries, they're getting the sixes in between, that where they gets the scoreboard ticking along. 75-80 is what will be there in the minds with the bowling what they have. That was a loose ball, that was a loose ball. That was should have been counted for 6 actually. Sometimes it doesn't happen. Not every full toss balls, not every short balls are counted for 4 and 6. Surveys survives of that last ball and bowls a pretty decent over. Takes a wicket as well in that over. 41 for the loss of 2 wickets at the end of 5. स्क्रीनी मुखार कोण बसला ते माझ्या सायडीन रावता बॅट्समॅनाक डिस्टर्ब जाता माझ्या सायडीन रावचे तशेंच आमी 100 रुपयाचे 3 हाऊसेस काडिल्ले आसा तो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता 100 रुपयाक 3 हाऊसेस तो तुमी काडचे जरूर काडचे पहिले इनाम म्हळ्यार एक इनाम आसा ते 5000चे जर हाऊसी चड खपल्यो जाल्यार इनाम वाडटले This is nice shot. This is a beautiful shot here from Pope. The ball was in the slot. Instead of going across, he went straight. He's got lots of shot in his book. This is a clean strike. So W is bowling his second over. This is nice. What a shot this is. What a shot. Oh, great fielding. Magnificent fielding effort. I thought it's going for 6 runs. This is just like Sanjay Naik has given that effort in the super over at the long one region. That saved 4 runs and that was the difference. That 4 runs saved by Sanjay Naik at the long on region was the difference, and that's the reason why they entered in the semi-finals. And once again we have seen this kind of effort. 5 runs saved here. This time trying to go inside out over covers region, just getting inside of the bat. A slower plan, slower balls. Certainly again Sanjay Naik started from the first ball. It continues in the 6th over as well. 48. Just a boundary in this over so far. Not provided pace to Sanjay Naik whatsoever in this match. That's a good shot. That's a good shot. 6 runs. This time he had to be Superman to fly high in the air, or he needed to have a jacket to fly high, but that's not happening. So short arm jab which Pope likes gets a 6 for him over the mid-wicket region. With this 6 they are getting a move on here. Slightly expensive over compared to the standard. Avinash W stats for himself. 6 overs gone. 54 for the loss of 2. Sateri cricketers.
Only 1 over for Kalpesh, 2 overs for Gopal, and 2 overs for Sarvesh here. That's a lovely ball. Very good ball here. Right in the block hole. Hardly anything you can do in these circumstances. That's the best ball to be bowling, especially in the 7th over. And Sarvesh has the ability. I've seen many a times bowling those Yorkers consistently. Almost 3 to 4 balls he can bowl in that area. This time in the air, this time he gets 6 runs, no chance for the fielder. Pope is the man that is changing, and he is turnaround altogether for Sateri cricketers. He is the man that is hitting sixes at the moment, and the bowlers are struggling to bowl against Pope. So another boundary here, another boundary. So Pope so far in the last 3 deliveries is 6, 6, 4 runs. Pope on a roll, and now Sateri cricketers scoreboard is looking pretty good, pretty decent. 65 at the moment. Sarvesh looking expensive. Sarvesh is bowling the length. The way they were bowled Sanjay Naik with a set plan, the plan is definitely not working for Pope. He is all over them at the moment, and he's changing the complexion and scenario of the second semi-finals. This time in the air, this might be chance. Oh, what a catch! What a beautiful catch this is. Sarvesh Gadi, Rohit Gadi in fact taking a stunning catch. Diving in front with both his hands, and it was always clean catch. Appreciated by everyone around on this ground, by all the fielders, all the players, all the spectators, and even in the commentary box. That was a stunning catch to get rid of Pope, and this might be just a turning point. So the score is 65 for the loss of 3. This is in the air, nothing short, landing just in front of the fielder, and Bablu gets off the mark with a single. So with this single, score moves on to double six, and there is a prize announced here for Sanjay Naik if he hits 2 sixes in 2 balls where he faces. He'll get a cash prize of 1,000 from Sopi. That's outside edge. A struggling innings from Sanjay Naik comes to an end. A big age could be heard in the commentary box. And the plan here for keeping Sanjay Naik in check right from the start has worked. And not innings of substance here for him. And that's the reason why so far the score is 65 for the loss of 4 after the completion of 7 overs.
Bablu also goes back to the pavilion, starting of the 8th over. Siddhartha also picks up the wicket. They were looking to get somewhere around 80, which is not happening at the moment. They require at least 2 sixes, couple of sixes required. Sunil Sawant, who is in good form, is at the non-striker's end, and here comes Swapnesh Ghatu. 5 balls left. How much they will get? At the moment, they are 66. 66 is also not a bad total, but still 5 balls left. You can expect them to get 75 at least. So 75 in 8 overs with the bowling depth is going to be a great game of cricket. Whenever I see it and do commentary in various parts of the Goa as far as semi-finals are concerned, when one semi-final is one-sided, then the second semi-final is mostly close. And we've already witnessed one totally one-sided semi-finals. So expecting the second semi-finals to be little better one and close one. So once again, missed here by Ghatu. Once again, he was trying to play across, and that's the mistake committed. The ball is shaping away from him. They are looking for big hits. They are looking for big hits at this moment. They just got 3 balls left. Still not in the comfortable zone. Still not in the comfortable zone is Sateri cricketers. 67 for the loss of 5 wickets. Just 3 balls left. 3 balls left here. That's good bowling here. That's very good bowling. The left arm is working, and it was started by Gopal. In fact, Avinash W was started with slow balls against Sanjay Nayak. Then it was leg spinner. Then once again Kalpesh as a leg spinner. And apart from Sarvesh, who provided the pace, the rest of the bowlers hardly provided the pace and bowled those cutters in the right areas. Another good over so far for YASH developers. Going for the switch hit, should be another single in terms of extra. Off the bat, maybe by signal here. (69). That's a good shot. That's a flat batted 6 here from Chono. And Chono finishes off this innings in style for Sateri cricketers. They require to get somewhere around 75 plus. They managed to get through that as a hit of the last ball. This 6 will give them a little boost. Feel confident. Yes, we have got a total that is required. 8 overs. 75 is what they've got. 76 runs are what is required for YASH developers of Naveli Panchayat to beat Sateri cricketers of Kurchera Municipality and enter into the finals to play against 3 cricketers of Sakwar. Interesting contest. Not a high score, not a low score. Well balanced for both the teams, and it will be a great game to watch out when the batters of YASH developers come on the wicket. And it's over to Ashok Naik sir for further updates of this run chase.
नाइक ने बनाए 15 रन, पुष्पसेन देसाई ने 3 छक्के लगाए 2 चौके लगाए 28 रन बनाए, फहीम ने 1 चौका 1 छक्का लगाया 10। और गेंदबाजी की तो तारीफ करनी पड़ेगी, गोपाल गावस हो, अविनाश गावस हो, सभी ने बिल्कुल एक नियोजनबद्ध जो कि एक गेंदबाजी रही और एक अच्छा टोटल है। देखना होगा, बैलेंस टोटल है, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा है, नहीं कहूंगा कम है, लेकिन फाइटिंग टोटल है मैच में। सेमीफाइनल पहला मुकाबला एक तरफी रहा, दर्शक भी काफी नाखुश हो गए, लेकिन दोस्तों ये मुकाबला रोचक होगा। दोनों टीम एक से बढ़कर एक है, तो ये बड़ा मैच होगा मैदान पर। देखना होगा, ओपनिंग जोड़ी निकल रही है, टारगेट है 76 का। छिहत्तर रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच में। देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है। तुवी क्रिकेटर्स के सामने फाइनल में आखिरी मैच के साथ कौन लड़ेगी, अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, सामने सुपरमैन समर्थ गावस और उन्हीं का साथ देने के लिए साहिल गावस, और पावर प्ले का ओवर बॉलिंग मार्ग पर चंद्रेश। 76 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। और दूसरी इनिंग की शुरुआत, पहली गेंद। और पहली गेंद अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टूर्नामेंट के साथ और एक बार फिर से जानकारी, शाम के दौर में लकी ड्रॉ कूपन हाउजी 100 रुपए में आपको लकी ड्रॉ कूपन जो मिल सकते हैं, 1 लाख रुपए, 50,000 और 100 रुपए में हाउजी, और उसी के साथ जो कि आप इनाम जरूर पा सकते हैं। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। शायद थोड़ा सा अचंभित हो गए समर्थ गावस, बिल्कुल इस गेंद के लिए तैयार नहीं थे और मिड ऑफ पर दाद देनी पड़ेगी। कैचेस विन मैचेस, बहुत ही अच्छा कैच और पहली सफलता मिलती हुई सातेरी क्रिकेटर्स को। डीजे कभी कभी घातक मैदान पर देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से इस गेंद पर बिल्कुल तैयार नहीं थे समर्थ गावस। थोड़ा सा अचंभित हो गए, जब खेला तो बल्ले पर ऊपर लगी, और मिड ऑफ के फील्डर को तो बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। रजत बहुत ही अच्छा कैच, एक अच्छा विकेट। शुरू में 76 के टारगेट के सामने रनों का खाता अब तक शुरू नहीं हुआ है। यश डेवलपर क्रिकेट टीम का मैदान पर साहिल, और साहिल का साथ देने के लिए अविनाश गावस, वो बल्लेबाजी के लिए। बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चंद्रेश। ऑन साइड पर 2 फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। आते आते स्विच हिट, डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद निकले उनसे पहले। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। चौके के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोला अविनाश गावस ने। फिर से इस बार अल्टी पल्टी, कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 5 रन 1 विकेट पर। समर्थ गावस बिना खाता खोले 0 पर। शायद ये बड़ा धक्का है जरूर, लेकिन सामने बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, मैच बिल्कुल कांटे का होगा। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साहिल गावस, वो सामना करते हुए चंद्रेश की गेंदबाजी का। दोस्तों 100 रुपए में 3 कूपन मिलेंगे हाउजी के,
लकी ड्रॉ का एक कूपन 100 रुपए में आपको 1,00,000 रुपए और 100 रुपए हौजी के साथ आपको जरूर मिल सकते हैं। जो पहला इनाम है वो है 10,000 हौजी 10,000 5,000 रुपए का। और स्विच इट, लाजवाब टाइमिंग और गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे दो शॉट भी लग चुके हैं पावर प्ले में जो सख्त जरूरी थी। 76 का टारगेट है और चंद्रेश राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। शायद जिस तरह से गेंदबाज की रिएक्शन थी, मेरे ख्याल से गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ था, लेकिन विकेट के पर कैच पकड़ नहीं पाए संजय नाइक। पहले ओवर का में स्कोर टोटल हो चुका है 11 रन 1 विकेट पर। पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई जो पावर प्ले का ओवर है और बल्लेबाजी में जिन्होंने खासा योगदान दिया, 15 रन बनाए, 28 रन बनाए पुष्पशील देसाई ने। बहुत ही लाजवाब, जो थोड़ा सा मिडल ऑर्डर पर रन नहीं बन रहे थे, संघर्ष हो रहा था और आखिरी गेंद पर छक्का लगा सनील के बल्ले से। तो यह था 75 का टोटल, 76 का टारगेट। पहला ओवर समाप्त 11 1 विकेट पर और संजय नाइक वार्म अप करते हुए खुद का पहला, टीम का दूसरा यानी पावर प्ले का ओवर लेकर। और फुल टॉस उड़ाया स्टर्लिंग बाउंड्री पर, गेंद चली गई डीप स्टर्लिंग सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। दूसरा निकलता हुआ अविनाश गावस के बल्ले से एक फुल टॉस के लेग स्टंप पर और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। 15 रनों पर आगे बढ़ा टोटल 1 विकेट पर। और यह भी मौका था, यह भी मौका था, फुल टॉस गेंद थी। अगर सामने खेलते तो मिड विकेट पर छक्का बन सकता था, लेकिन पैड पे टकराई। थोड़ी सी परेशानी हो चुकी है मेरे ख्याल से, जो रिवर्स शॉट खेलने के लिए निकले थे गेंद लग चुकी है पैड पे और पानी की बोतल लेकर अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर जाते हुए। 15 रन 1 विकेट पर दूसरा ओवर जो जारी, एक फुल टॉस, लेकिन इस बार गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद जाके सीधी पेट पे टकराई। सीपीएल का दूसरा पर्व आज, वो भी फाइनल का मैच होगा। शानदार ट्रॉफी है, सेमीफाइनल के साथ फाइनल के मुकाबले होंगे, जो रात का बिल्कुल टूर्नामेंट है। और इस मैदान पर सावरडेम बॉयज जिनका ओर से एक बड़ा आयोजन है, पिछले 20-25 दिनों से काफी मेहनत कर रही है ये पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी, और वो वक्त आ चुका है जो शाम के दौर में आपको लकी ड्रॉ कूपन और हाउसिंग। और इस बार कट किया थोड़ा हवा में शॉट कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर से दूर। और जब तक कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ आगे बढ़ा स्कोर 16 रनों पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल गावस और उनके साथ अविनाश गावस ये जोड़ी मैदान पर, समर्थ गावस एकमात्र विकेट आउट होकर वापस। लेफ्ट हैंडर बैटर साहिल, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला। मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद थी संजय नाइक की। जो दूसरा ओवर जारी है वो पावर प्ले का, वो मैदान पर चलता हुआ सातरी क्रिकेटर्स के ओर से। और फिर से इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर टोटल 16 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 76 का, 76 रनों का मैच को जीतने के लिए। दाईं से ओवर द विकेट
छोटी गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन उतने बीचों बीच नहीं लगी। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और एक रन बड़ी तेजी के साथ एक बार फिर से स्कोर के खाते में। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ जो 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होकर वापस समर्थ गावस, अविनाश गावस और साहिल गावस ये जोड़ी मैदान पर दाएं और बाएं की यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम के ओर से। एक ओर से तुवी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम जो अंतिम फेरे में प्रवेश कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में। जो 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, 3:15 बजे टॉस और मैच शुरू होगा। जानकारी एक बार फिर से तुवी क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन उसके साथ किसका मुकाबला होगा, कौन खेलेगा उनके साथ, ये थोड़ा सा समय बाकी है जो उसका फैसला का देखना होगा। फील्डिंग में तब्दीली, अब दूर दूर जमाई गई फील्ड और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर बॉलिंग बार पर आ चुके हैं। एक बार फिर से खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए चंद्रेश। फील्डिंग में तब्दीली क्योंकि पावर प्ले का खेल जो था वो समाप्त हुआ मैदान पर। लेफ्ट हैंडर के लिए 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर 2 फील्डर है, एक लॉन्ग अप, एक डीप कवर पॉइंट, ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी हवा में गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर और लगभग 2 फील्डर को बीट करते हुए गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। टोटल स्कोर लॉस ऑफ 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, यॉर्कर, एक वाइड यॉर्कर और बिल्कुल सही अंदाज के साथ खेला। मिड विकेट से फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से 1 रन बड़ी तेजी के साथ अच्छा क्रिकेट खेल रहे मैदान पर साहिल गावस, उनका साथ दे रहे अविनाश गावस। बॉलिंग बार पर खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए चंद्रेश और स्कोर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 22 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार एक और फुल टॉस, लेकिन गति में परिवर्तन किया था, शायद थोड़ा सा करीबी मामला था मैदान पर। स्टंप के बिल्कुल बगल में गेंद निकली, आखिर में थोड़ा सा जो गेंद को स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन और नीचे तरफ से थोड़ा सा परेशान जरूर हुए उस गेंद के साथ अविनाश गावस। स्ट्राइक पर एक बार फिर से सामना करते हुए चंद्रेश की गेंदबाजी का। और स्लॉक स्वीप, लेकिन फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते मिड विकेट पर एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग थी मैदान पर और सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बैटर साहिल गावस जो सामना करेंगे चंद्रेश की गेंदबाजी का। खेल तीसरे ओवर का जारी मैदान पर। टारगेट है 76 का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में चलता हुआ। और छोटी गेंद और इस बार बहुत ही बेहतरीन तगड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और इस बार बहुत ही कड़क शॉट साहिल के बल्ले से मिले 6 रन टीम को स्कोर के खाते में। इस बार शफल होकर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। इस बार गेंद को आगे रखा, ज्यादा रूम नहीं दिया, मौका नहीं दिया गेंदबाज ने, चंद्रेश ने। एक डॉट गेंद और इस डॉट गेंद के साथ खेल टोटल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 29 लॉस ऑफ 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर 29।
ऊपर के सत्र में मुकाबला जारी है, जो दूसरे सेमीफाइनल का मैच समाप्त होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा 20-25 मिनट का, और 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा, 3:15 टॉस, और टॉस के साथ मैच फाइनल का मुकाबला जो शुरू होगा। इसी बीच में बॉलिंग में परिवर्तन होती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन सातेरी क्रिकेट टीम के ओर से बॉलिंग बार पर आ रहे हैं गंदार, खुद का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर सामने अविनाश गावस। स्कोर 3 ओवर का खेल समाप्त, 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर, थोड़ा सा बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर संजय नाइक वो फील्डिंग कर रहे हैं। छोड़ा जाने दिया, ऑफ स्टंप से बाहर है इस गेंद को, वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 30 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 1 विकेट पर। चौथा ओवर जारी है मैच का। राइट आर्म ओवर द विकेट गंदार अपने बॉलिंग बार पर, ऑफसाइड पर थोड़ा फील्डिंग को जो कि सजा रहे हैं। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री और एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और स्विच और लाजवाब बेमिसाल शॉट, गना चुंबे सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। मानूंगा, दर्शकों के लिए बिल्कुल थैंक यू कहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसे गेंदे बाहर जा होती हुई जो सभी दर्शकों ने वापस किए। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 6 रन मिले स्कोर के खाते में अविनाश गावस को। ड्राइव किया इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया। 37 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। 37 रन, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर साहिल गवस, बॉलिंग बार पर गंदार अगली गेंद लेकर। ओ इस बार भीतरी किनारा, बाल बाल बचे, गेंद बिल्कुल स्टंप से जो कि बगल में गेंद निकली, और जब तक विकेट कीपर के पीछे गेंद फील्ड होती, 1 रन इसे बीच में पूरा किया साहिल ने अपने टीम के लिए, और यश डेवलपर्स नावेलिम क्रिकेट टीम पहुंची 38 पर टोटल, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर मैच का जारी, टारगेट है 76 का। अच्छी गेंद, आखिर में थोड़ा धीमा फेंका, स्लोवर वन, अच्छी लाइन पर बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर किया, जल्दी खेल बैठे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। गंदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर सातेरी क्रिकेट टीम की ओर से। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, लगातार शायद कप्तान की सोच है, अविनाश गावस जो स्विच हिट लगा रहे हैं वहीं पर फील्डर को बाउंड्री लाइन पर तैनात किया। कप्तान की बिल्कुल अच्छी सोच है मैदान में सातेरी क्रिकेटर्स की। यह गेंद एक बार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 38 पर, 1 विकेट पर। चौथा ओवर जारी है मैच का, टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 76 यानी 76 रनों का।
और इस बार उड़ाया मिड विकेट पर गगन चुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे चवालीस रन, आने वाले 24 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 32 रन। 24 डिलीवरीज 32 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, जिन्होंने बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 28 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए अपने इनिंग में, वो पुष्पशील देसाई आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। सामने साहिल और नॉर्थ टाइगर इन पर अविनाश गावस। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 4 ओवर बाकी, 24 डिलीवरीज 32 रन, यानी 8 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे सातेरी क्रिकेटर के सामने यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम को। ओवर पिच, कैच का मौका मिड विकेट पर सामने हाथों में फील्डर के, और दूसरा विकेट पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए पुष्पशील देसाई। डीजे थैंक यू डीजे, एक बहुत ही थैंक यू डीजे। अच्छी इनिंग, 19 रन बनाए, 19 रनों में 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, और उनके आउट होने के बाद टीम के विकेट कीपर बैटर रोहन नाइक मैदान पर यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम के। 23 डिलीवरी 32 रन, पहली गेंद पर सफलता पुष्पशील देसाई और पॉप है। और देखना होगा, मैच अभी भी बाकी है दोस्तों, 50-50 का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, कौन भी जीत सकता है यहां पर। और अगर 1-2 विकेट चले गए, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर होगा, और अगर 2 बड़े शॉट लगे तो मैच थोड़ा सा 19-20 का होगा मैदान पर। देखना होगा क्या होता है। रोहन नाइक आ चुके हैं टीम के विकेट कीपर बैटर, और बॉलिंग बार पर पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए पुष्पशील देसाई। और छोटे गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला। डीप स्क्वायर लेग पर आते आते एक जोरदार शॉट, और इस छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम के। और इस बार फिर से ऑन साइड पर खेला, ओवर पिच गेंद को हाफ वाली पर लेकर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 51 रनों पर। और फुल टॉस, कैच का नहीं मिला बिल्कुल मौका, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर लगभग काउ कॉर्नर पर संदीप गेंद को उठाते फील्ड करते। एक फुल टॉस गेंद थी, मौका था और एक बड़े शॉट का, लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं थे अविनाश गावस इस शॉट के लिए, और 1 रन इस बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, हल्के से स्लाइस किया गेंद को, पॉइंट पर फील्डर, अच्छा थ्रो, लेकिन पुष्पशील गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए सफाई के साथ। रोहन नाइक थोड़ा सा डेंजर एंड पर थे। 1 रन बना स्कोर के खाते में, सिंगल डबल बीच बीच में, और इस सिंगल के साथ स्कोर 53 टोटल। और स्लॉग सिप, स्क्वायर लेग पर सीधी सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 59 टोटल।
में, और सामने सातरी क्रिकेटर्स को इस ओवर में कम से कम एक नहीं 2 विकेट लेने पड़ेंगे तो मैच में वापसी होगी मैदान पर। अमल मत करते लंबा पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली और इस पर एक बहुत ही कड़ा प्रहार 6 रन के लिए। तलाश थी उस ओवर में रन बनते हुए मैदान पर। वो एक वाइड यॉर्कर ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर टोटल हो चुका है 67। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, बहुत तेज गेंद, थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। टीम के विकेट कीपर बैटर है रोहन नाइक, अच्छे कैच, अच्छे स्टंपिंग और कई बार बल्लेबाजी भी बिल्कुल अपनी टीम के लिए। संजय नाइक अगली गेंद लेकर, इस बार क्या मौका मिलेगा? जी नहीं, लॉन्गर बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। बबलू सावंत सर आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो दी जाएगी, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो पहला मैच था वो थे सरफराज नवाज उर्फ चप्पू, और सरफराज नवाज उर्फ चप्पू जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, और अभी अभी जो मैच समाप्त हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। चलिए दोनों हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने मैन ऑफ द मैच के लिए, और चलिए बबलू सावंत सर आप ही के हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। चलिए सरफराज नवाज उर्फ चप्पू और दूसरे जो मैन ऑफ द मैच अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। दोनों टीम 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 3:15 बजे टॉस, और टॉस के साथ मैच होगा फाइनल का, ये बात आप बिल्कुल नोट कीजिए। चलिए दोनों टीम के खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच सरफराज नवाज उर्फ चप्पू और अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। चप्पू चलिए प्लीज,
अविनाश गावस, चलिए प्लीज मैन ऑफ द मैच, और सरफराज नवाज और ऊपर चप्पू। चलिए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी के लिए 100 रुपए में आपको लिए लकी ड्रॉ कूपन, 1 लाख रुपए, 100 रुपए में आपके 3 हाउसिंग, शायद वो भी आप ले सकते हैं, आपको वहीं पर भी इनाम मिल सकता है। चलिए प्लीज दोनों खिलाड़ी अविनाश गावस और